Hello and welcome. Welcome to the weekly analysis of Nifty and key stocks of Nifty. Friends, आज है 4th December and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones, along with a trading opportunity for 7th December, as well as the entire week in Nifty, as well as key stocks of Nifty. Right. So if you are new to our YouTube channel, friends, do consider subscribing to this YouTube channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get intimation, and also be generous to share videos with your friends and trading communities. You can see that there are many, in fact, almost 300 plus videos here in our YouTube channel based upon technical analysis, fundamental analysis, how to select the stock, data analysis, and I'm sure you can get immensely benefited from these videos, right? And these videos have been created for our trading and investing communities, friend. Do use them, do get benefited from them, and do share these. Let's look at now daily chart of Nifty and Bank Nifty to assess how the market has been in last 1 week since we estimated and talked about the key stocks and Nifty, previous Friday. If you look at Nifty and Bank Nifty's daily chart, you can see that today there was a good bullish movement in Nifty as well as Bank Nifty, and they both made higher high and higher low. In fact, Nifty, if you see consistently for last 6-7 days, been making higher high and higher lows, and uptrend continues. However, in Bank Nifty, we could see that a little of consolidation is still going on as we are still in a 25th November large candlestick, right? We are still इसके अंदर ही हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, राइट? एंड लास्ट में वीक मैंने बोला भी था कि ये वीक हमारा कंसोलिडेशन में ही निकलेगा, राइट? सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग स्टॉक्स, बिकॉज उसके लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा. सो इन दिस video will be talking only about Nifty and key stocks of Nifty. So let's see the performance of Nifty from the week gone by, right? So we can see that from the week gone by, now Nifty is almost 200, in fact 150 points above, right? So 150, 160 points above here, and we've been consistently seeing buying in Nifty and key stocks of Nifty, in fact, except a couple of stocks which are draggers, about whom we'll talk later. And अगर आप RSI के पर्सपेक्टिव से देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमको डाइवर्जेंसेस में, ऑल्दो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ, जो अप मूव की स्ट्रेंथ है, वो वीक होते जा रही है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स विच वी शुड नोटिस व्हेन वी आर एनालाइजिंग Nifty. Now, looking at candlestick perspective, so on a daily chart, it has made a bullish candle today. And on a weekly chart, if you see, on a weekly chart also, the gone week buy has made a large bullish candle after a week of consolidation as a doji, right? So, friends, at the end of the session, of course, we'll be looking at how to trade Nifty on intraday. But before that, let's find out what kind of movement, the resistance and support levels it may have next week, or at least for Monday, right? So if Nifty has any kind of bearish bias, you would see the first level of support it will have is on a lower side at 13,217. Second level of support is coming at 13,187. Third at 13,154, and the fourth level of support will come at 13,109. So let me jot it down at this level here such that you can make a note of it, friends. So 13,109 seems to be on the downside. On upside, अगर Nifty upside में move करती है, friends, well, it is not 9, it is 12. Let me rather remove it and correct it here. So it would be 13,012 on the lower side. On the upper side, let's see, 13,278 is the first level of resistance. 13,300 is the second level of resistance. 13,350 will be our third level of support, resistance. And अगर 13,350 friends टूटता है, in that case 13,420
is our resistance on upper side. So this is the range in which you can see Nifty moving, on Monday, right? एंड अगर हम वीक की बात करें रेंज में फ्रेंड्स, तो वीक की रेंज जो है हमारी वीकली रेंज कुड बी 12,856 to 13,550. So that's the weekly range which I have taken from the price action as well as option chain data, right? Now let's look at the performance of some of the key stocks of Nifty, friends, such that we see that how these key stocks have performed in last 1 week. Let's talk about Reliance, and we've been having bearish view in Reliance as it was moving in a डिसेंडिंग चैनल, राइट? असेंडिंग चैनल जो थी ये तो काफी टाइम पहले तोड़ चुका है, और डिसेंडिंग चैनल में भी इट ट्राई टू मूव अप, हाउएवर ये जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, 50 डेज का मूविंग एवरेज, इट डिड नॉट अलाउ द प्राइस टू क्रॉस इट, एंड बियरिशनेस बनी हुई यहाँ पे. ऑल्दो Nifty has been going steady upside, Reliance has not been supporting that move, right? There is a small trend line as at present it is taking the support there. However, it is not making any large candle. अगर आप देखेंगे तो large candle यहाँ पे जो real sell off आया था, that was on 20th November, and last 10-12 दिन में कुछ खास मूव यहाँ पे नहीं आई है. छोटे छोटे डोजीज बन रहे हैं और इन कैंडल कंसोलिडेशन हो रहा है ये कैंडल के अंदर. ये लार्ज रेड कैंडल, जैसे ये रेड कैंडल की कैंडल रेंज टूटेगी फ्रेंड्स, देन यू वुड सी there will be either upside breakout or downside breakout, right? But looking at the kind of movements at present, इसकी bearishness दूर जाने का नाम नहीं लेने वाली है. यहाँ पे strength MACD में भी नहीं आ रही है. So expect Reliance to be coming to touch around 1805, which is our old target for Reliance, right? Unless until something splendid happens, some kind of great news comes in Reliance, right? Otherwise bearish bias बना. Bharti Airtel को देख लेते हैं friends. Bharti Airtel is in telecom sector at least very good competitor of Reliance, and it has been having bullish bias for a long time. We had seen inverted head and shoulder in this, and I think my buy call was somewhere around 400 के level पे हमने इसमें buy call ली थी. उसके बाद में it within a 10 days it moved up, but profit booking start हो गई थी यहाँ पे, right? Then again it has steadily moved up, consolidated, and at this point of time it is still in up move. हमारा पहला टारगेट इसका था फ्रेंड्स 503 का, एंड सेकेंड टारगेट है 529 का. हाउएवर 529 का टारगेट तोड़ने से पहले इसको ये एक जो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये तोड़नी पड़ेगी, राइट? एंड इट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बिकॉज इट्स बीन अ वेरी वेरी ओल्ड ट्रेंड लाइन. आज की नहीं है ये ट्रेंड लाइन, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, राइट? सो दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड once of course it crosses 529, 560 could be the range for the target for Bharti Airtel. So Bharti Airtel with rising market will rise, but if the market pauses or corrects, you would see Bharti Airtel also going in the same direction. As of now RSI 61 है, थोड़ा bullish bias अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, right? So third constituent is ITC, which we generally talk in our weekly analysis, friends. And ITC, I think we had taken a call somewhere around 150 के आसपास में हमने यहाँ पे बाई की कॉल ली थी, एंड उसके बाद में अगर देखें आप तो दिस इज मेकिंग अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर, राइट? राउंड बॉटम पैटर्न दिखा रहा है, एंड इसका जो हैंडल है दैट हैज बीन जस्ट ब्रोकन. सो द नेक्स्ट टारगेट इज 200, विच इज वेरी क्लोज बाय. 200 टूटता है तो 208 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है इसमें, एंड फाइनल टारगेट 235 का है. सो वन कैन मेंटेन लॉन्ग पोजीशन स्टिल इन ITC, राइट? एंड ITC में ऑल्दो यहाँ पे MACD थोड़ा वीकनेस दिखा रही है, but there is a small divergence coming from this level to this level, so you need to be careful, friends, here, right? Keep an eye on this movement. हालांकि इसने ये डारोस बॉक्स से आज ब्रेकआउट दिया हुआ है, but RSI का थोड़ा सा you can see that RSI is flat while the price is going up, so you may see some correction again going forward, right? ITC के बाद फ्रेंड्स एशियन पेंट की बात करते हैं. एशियन पेंट्स वी बीन बुलिश फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड लास्ट टाइम मैंने बोला था कि जैसे ये बॉक्स को ब्रेकआउट करे यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन. आवर टारगेट विल बी 2310 एंड 24
465. So 2310 ka target, friends, it has already reached, and the last two sessions it has tried to approach 2465 ka price. If the momentum remains up in Nifty, you would see it has got further higher targets. Let me check. ये कहाँ गए? So in coming time, you can see that it might go towards 2680. Yeah, that's the next target for Asian Paint, right? So although expensive, but fundamentally very strong company with a very good distribution network, right? That's what it gets advantage for, and that's what it gets demands a strong premium in the market. Now let's look at Titan, friends. Titan, again, it was consolidating in this box, and I said कि अगर ये box में breakout मिलता है इसको upper side में, you would see it will be touching 1440. तो 1440 आज इसने टारगेट अचीव कर लिया, फ्रेंड्स. 1475 इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर टाइटन, राइट. शोरूम्स खुल गए, बिजनेस हो रहा है, और 1475 के बाद में 1520 इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर टाइटन. सो सिंस 1410 का हमारा टारगेट अचीव हो गया, लेट मी रिमूव दिस लाइन, एंड these are the further further going targets for Titan. Still bullish है, and indicators and technical basis पे completely bullishness यहाँ पे बनी हुई है, friends. Now let's look at the next constituent, which is टाटा मोटर्स, राइट. दो ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स हम लेते हैं, और टाटा मोटर्स में भी आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे बाई की कॉल दी थी अराउंड 136 140 के लेवल पे, एंड यू कुड सी दैट इट हैज स्मूथली ब्रोकन आउट ऑफ दिस रेंज. इसने भी एक राउंड बॉटम का पैटर्न ही बनाया था यहाँ पे, हालांकि कंसोलिडेशन बहुत कम टाइम पे हुआ. तो अब एक नया कंसोलिडेशन इस बॉक्स में हुआ था. इफ यू रिमेंबर लास्ट वीक वी डिस्कस दिस बॉक्स, एंड आई सेड अगर ये बॉक्स में ब्रेकआउट मिलता है अपसाइड में तो आप लॉन्ग जाएं, और 179 के आसपास में ब्रेकआउट मिला है. 184 पे चल रहा है अभी, फ्रेंड्स. 200 एंड आई थिंक one more target is there in this. Let me, sometimes the 221 और 222 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है टाटा मोटर्स में. सो ऑलमोस्ट अराउंड 15% की अपसाइड हमको और इसमें देखने को मिल सकती है इन रिसेंट फ्यूचर, राइट. हालांकि बाइंग की स्ट्रेंथ एमएससीडी थोड़ा वीक दिखा रहा है, एंड आरएसआई बहुत स्ट्रांग है इसमें, राइट. नेक्स्ट मारुति. नेक्स्ट ऑटोमोबाइल का जो हम स्टॉक लेते हैं, फ्रेंड्स, वो है मारुति. और मारुति में आपने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखा होगा डे बिफोर, in fact yesterday, right, not day before. So yesterday we saw that हमारा 7550 का जो टारगेट था वो मीट हो गया. We had seen inverted head and shoulder. अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो, I keep on discussing these patterns week after week, and I'm sure you should be taking advantage of these, right. And next target हमारा 7950 का है. 7950 बहुत नजदीक में, फ्रेंड. मे बी मंडे को ये अचीव हो सकता है अगर हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा बुलिशनेस रहेगी तो, राइट. एंड आफ्टर दैट व्हाट, आफ्टर दैट यू वुड सी योर नेक्स्ट टारगेट कुड बी समवेयर अराउंड 8500 के आसपास का आपको ये टारगेट मिल जाएगा यहाँ पे. लेट मी रादर मार्क दैट. सो दिस कुड बी आवर नेक्स्ट टारगेट समवेयर हियर, 8532 के आसपास का. So make a mark of it. So Maruti is in a very bullish mode now. Vehicles are getting sold, and factories are running in full fledged, right. People are preferring to buy small individual cars rather than traveling by public transport. COVID होने का डर है, and मरता क्या ना करता, right. Now let us look at TCS, friends. Now TCS में हमने ये एक ट्रेंड लाइन देखी थी, and I've been having a commentary for last 2 months that यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू है, and we also saw that in Nasdaq also, right. अभी देखो Nasdaq has given a breakout, and ये TCS also has taken a breakout at this level, right. तो जो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमको बाइंग का लेवल somewhere around 2550 के आसपास में आ सकता है, and that could be a good level. It may not be prudent to expect that level to be coming now, because stock has returned from 2625 75 पॉइंट ऊपर से ही ये रिटर्न मार चुका है. So watch out right now. Again, it is in consolidation. I would say within 2600 to 28
100 के लेवल पे, ये 2850 के लेवल पे कंसोलिडेशन के जोन में है। अगर आप लॉन्ग होराइजन मतलब 1 साल 2 साल के लिए रख सकते हैं, ऑफ कोर्स देन इट कुड बी अ बाइंग प्राइस, बट मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए हमको। जब भी करेक्शन होगा तभी टीसीएस में एंट्री लेनी चाहिए। Next to TCS is always our Infosys in IT sector, friends. So let's have a look at Infosys. Again, Infosys is consolidating in this large box, right? ये जो large candle बनी थी हमारी 15 नवंबर को, उस कैंडल में अभी भी ये कंसोलिडेट कर रहा है, एंड नॉट मच इज हैपनिंग इन फैक्ट इफ यू सी। सो अनलेस until it moves out of this box, there is no need to take any position. If you are in profit, stay in profit, and if you want to book the profit, no issues on that as well. Nobody has ever become poorer by booking the profit, so you can always use that philosophy what I generally use, right? Part profit book karte rehna chahiye. And I think main जो large brokers हैं, their running commentary about Infosys is of much higher targets. Although at this point of time, I find it's very expensive in terms of price, current market price, right? Next stock what we'll discuss is Tata Steel, friends, and as you can see that metal sector is booming. हमने double हेड एंड शोल्डर देखा था मेटल सेक्टर में, इंक्लूडिंग इन टाटा स्टील, एंड मैंने यहाँ पे आपको एक टारगेट दिया था। इनफैक्ट कई टारगेट दिए थे। 560 का पहला टारगेट था, अचीव हो गया। सेकंड टारगेट हमारा 610 का था, वो अचीव हो गया। 650 का हमारा थर्ड टारगेट है, और 719 मतलब 720 के आसपास में हमारा ये नेक्स्ट टारगेट है। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। आई हैव टेकन entry already in this. So friends, when I'm discussing these stocks, I'm discussing these stocks for the educational purpose. I have no recommendation when I'm saying that I'm taking position, or I see that the target is there. So if you want to take position in stocks, do consult with your trading coach or investing coach, or fund manager or financial manager, whomsoever you have got, right? तो उसके, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक रिस्की बिजनेस है, बिना सीखे हुए इसमें एंट्री लेना घातक हो सकता है। सो दैट्स माय caveat to you. Take care of that aspect of trading. So all metal sector companies are doing well at this point of time, and Tata Steel is doing good. Tata Steel has reduced a lot of debt on it, so that's one of the reason Tata Steel is looking more lucrative at this point of time. Right. So friends, we discussed almost 10 stocks of, 10 key stocks of Nifty 50, right? And except Reliance. Reliance, of course, is in a downtrend, while as others are either, in a very strong bullish trend, contributing to Nifty's up move, or they are consolidating like TCS OA, Infosys OA, right? So watch out these key stocks week after week in my weekly analysis of Nifty and key stocks of Nifty. Friends, let's have a look at data points now. कि data points Monday के लिए क्या indication दे रहे हैं, right? So अगर हम बात करें आज Nifty की, friends, we are talking about Nifty closing at 13,258, and that's amazing, isn't it? All time high है ये Nifty का, and the option chain what we are looking at is expiring on 10th December, right? So 13,250 will be our at the money, एंड एट द मनी के अराउंड में हम देखेंगे कि बुल्स और बियर्स ने किस टाइप की पोजीशन, फ्रेंड्स, यहाँ पे बनाई हुई है, सच दैट वी कैन गेज द emotion of the market, right? So let's look at 13,000. So this is our ATM, somewhere around. This is our ATM. So at the money के आसपास में देखेंगे अगर तो bears have got positions on the call side, while as the bulls have got positions on put side, right? तो 13,250 पे almost half lakh का open interest दिखाई दे रहा है, friends, and 13,200 पे massive put writing हुई है आज. So bulls have got immense confidence. 2.2 million contract fresh आए हैं. Overall 3.024 million contracts यहाँ पे है. So this will work as my support one. अगर ये level टूटता है, friends, next level could be 13,150, जहाँ पे 7.8 lakh contracts दिखाई दे रहे हैं, और ये level टूटा तो 13,100 could be our next support level, which will turn out to be very strong level. यहाँ पे 1.2 million contracts fresh write हुई आज, और overall
1.035 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर हम मैक्सिमम ओआई के हिसाब से देखेंगे फ्रेंड्स, तो दिस इज आर मैक्स ओआई, राइट? दैट इज माई सपोर्ट 3। सो 13,100 को मैं नीचे के साइड में लॉक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एंड अगर अब हम बियर्स ने क्या पोजीशन लिया हुआ है देखें, तो आज बियर्स ने थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज किया है। एटलीस्ट ये लेवल पे उन्होंने अनवाइंडिंग की है अपनी सेल की हुई कॉल्स की। नाउ however, at 13,100 you can still see there is 1.3 million contracts. At 13,200, 2.1 million contracts, and they have dared to sell 6.95 lakh fresh contracts here. So this is a matter of concern, I will say, right? मैं ये तो बोल नहीं सकता हूँ कि ये रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, क्योंकि मार्केट इस ऑलरेडी ऊपर है, राइट? So what could be your first level of resistance is if market dips slightly down. 13,250 could be your first level of resistance. अगर ये लेवल टूटेगा तो then you have got resistance at 13,300, जहां पे आपको 1.0 million contracts right हुए हैं आज. Now if you compare this 13,300 with 13,200 friends, there is a difference of almost double. जहां पे कि 13,200 पे आज put writing हुई है 2.2 million की, हमारी maximum call writing आज 1.059 million की हुई है 13,300 पे. So that's one resistance. 13,350 में कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है, ये 500,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे. 13,400 डेफिनेटली एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई देता है, जहां पे कि 1.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं, राइट? सो कुल मिला के मैं 13,400 को अपर साइड में देख सकता हूँ, और 13,400 टूटा तो 13,450 could be another level. यहाँ पे भी ओवरऑल 7.8 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, बट मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा है 13,500 में. सो अगर मैं ऑप्शन चेन के परस्पेक्टिव से बात करूं, तो आई कैन से 13,100 टू 13,500 का रेंज मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन से. नाउ लुकिंग एट द काइंड ऑफ पुट राइटिंग हैज हैपन, ऐसा लगता है कि बायस अपसाइड में है, राइट? हायर साइड में है बायस. अगर हम इसका पीसीआर देखें फ्रेंड्स, आज का पीसीआर है करीब करीब 1.20, कल ये था 1.07 का. सो 1.20 का जो पीसीआर होता है, दैट रिप्रेजेंट बुलिशनेस, राइट? सो ओवरऑल पुट को ओवरऑल नंबर ऑफ कॉल ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं, तो ये पीसीआर आता है. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द पीसीआर फ्रेंड्स, यू कैन गो टू आवर यूट्यूब चैनल. इन आवर यूट्यूब चैनल देयर आर 3 वीडियोस आई मेड हाउ टू रीड डेटा एनालिसिस, राइट? तो ये डेटा एनालिसिस का अगर आप पूरा तीनों वीडियो देखेंगे, each video is almost 20 minutes, and this has been created to understand the open interest, the PCR एंड ओपन इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर. तो ओपन इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक फ्यूचर का होता है एंड एक ऑप्शन का. तो दोनों को एक्सप्लेन किया गया, आपको काफी फायदा होगा. सो यू कैन गो हियर एंड लुक एट दैट एज वेल. नाउ बिफोर वी कंक्लूड अबाउट द निफ्टी ट्रेडिंग रेंज एंड वी गो इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, लेट्स हैव अ व्यू एट वर्ल्ड मार्केट. सो लेट्स हैव स्पेशली एट यूरोप. तो यूरोप में हम जनरली एफटीएससी लंदन को देखते हैं एंड डेक्स को देखते हैं. We have been seeing that UK had been making a nice flag, and मैंने कहा था कि ये लेवल से अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो इट विल हैव अ वेरी गुड बुलिशनेस. हालांकि एज ऑफ नाउ ब्रेकआउट हुआ है, बट यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल की ये अपर ट्रेंड लाइन है. सो इट माइट फर्दर कंसोलिडेट फॉर फ्यू डेज बिफोर इट कंप्लीट्स द फ्लैग. एंड फ्लैग की पूरी जो अपर लिमिट है ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट अपसाइड में है एफटीएससी में, राइट? सो दैट सीम्स टू बी वेरी एनकरेजिंग. सो that would definitely have the impact on market. Now अगर हम डेक्स को देखें फ्रेंड्स, डेक्स ने इनफैक्ट ये ब्रेकआउट लेने की कोशिश की on 30th November and in fact on 1st December as well, but फिर नेक्स्ट 2-3 दिन ये थोड़ा डाउन रहा, राइट? However, it is still in the flag pattern, and आई होप ये पैटर्न टूटेगा. एंड अगर ये पैटर्न ये लेवल टूटता है फ्रेंड्स, तो देन प्री कोविड लेवल से डेफिनेटली डेक्स जर्मनी यू वुड आल्सो सी गोइंग हायर. ऑफ कोर्स यूरोप में ये इंडाइसेस अभी भी प्री कोविड लेवल को टच नहीं कर पाए हैं, बिकॉज सेकेंड राउंड ऑफ कोविड केसेस इज हाईली कंसर्न एंड अच्छे नंबर्स में है वहां पे. सो द फियर is still there and the lockdown chal raha hai, right? So because of that, these indices have not really picked up. But both are looking
bullish at this point of time. Friends, let's have a look at Nasdaq before we go to ब्रॉड इंडेक्स इंडाइसेस ऑफ यूएस. सो नैस्डैक ने मोर और लेस आज एक ब्रेकआउट दिया है फ्रेंड्स. so, जो मैं ऑलमोस्ट लास्ट 2 महीने की बात कर रहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्टेड है, तो आई थिंक नाउ यू नो द मार्केट हैज गॉट अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन buying in tech companies. Nasdaq is a tech companies index, right? But अगर आप price action के perspective से देखेंगे, although it has made a higher high from this level, but आपका you know RSI में वो strength नहीं दिखाई दे रही. RSI low है वो level से, so this should also be noticed, right? So that is a negative divergence. Now let's look at DJI, that's US 30 का जो फ्यूचर है, Dow Jones का फ्यूचर and S&P 500 का फ्यूचर. Now you could see that today, Dow Jones as well as S&P 500 both are in breakout mode, right? So our market has already been bullish, and you can also see from these moving averages, the moving averages has moved away from each other in both the charts, right? So that shows the strength of uptrend. And at this point of time, although MACD is showing the weakness, yet RSI has picked up the strength. Now, if I look from this to this price level, I can see that price has gone higher and my RSI is weaker. So that shows me there could be a bearish divergences soon after. So don't plan for a long term at this point of time. Looking at this bullishness, I would still be looking at a short term gain in our market, right? क्योंकि अगर यहाँ पे bearishness आएगी because of these negative divergences, you would also see our markets falling. And अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में भी हमने divergences को already notice किया है, right? ऑल्दो बुलिश बायस दिखाई दे रहा है, चाहे पीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट देयर इज अ bearish divergence. And not only in RSI, I was also checking CCI, right? So CCI is also one indicator. तो वो भी commodity channel index, that also is showing negative divergences here. So take care of that aspect of it. As long as market remains above than 13,000, friends, you would see it is in bullish mode. हाँ, 13,000 के नीचे अगर ये जाता है तो डेफिनेटली यू वुड सी 12,800 12,750 के आसपास में you may see market going down. But looking at FIIs buying patterns at this point of time, today also FIIs bought 2,970 crore rupees of worth equity in cash market. Overall December में उनकी buying 206 करोड़ की है. नवंबर के मंथ में करीब करीब 65,300 करोड़ की उन्होंने बाइंग की. सो इतनी स्मार्ट मनी अगर कंट्री में फ्लो करेगी तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट तो ऊपर जाना ही है. ऑल्दो DIIs वर नेट सेलर टुडे 1,972 एंड ओवरऑल दिसंबर में 6,091 करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया. एंड नवंबर में उन्होंने करीब करीब 48,300 करोड़ का सेलिंग किया था. तो सेलिंग ऑफ कोर्स कम हो रही है, बाइंग ज्यादा हो रही है. दैट्स वन ऑफ द रीजन यू विल सी इक्विटीज आर defying the law of gravity, but that's good for the market, right? So we should at this point of time, as long as Nifty is all-time high, we should look at a short-term gains rather than either short-term or then for long-term, right? Then you plan 3 years, 4 years. Now अगर हम ऑप्शन में बात करें फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में पार्टिसिपेंट वाइज FIIs are mildly bullish, so are the retail investors, retail traders, but pros are sideways. And of course DIs don't get opportunity to sell the option, so we don't consider their data. On a future side, FIIs are net long in index future, while as pros, DIs and retailers are net short at this point of time. RSI अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, निफ्टी का RSI is at 74 today, कल 71 था, तो स्ट्रेंथ तो बड़ी है डेफिनेटली. हालांकि बियरिश बायस यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. अच्छी बात ये हुई कि आज इंडिया वीक्स गिरा है. इट्स एट 18 नाउ, कमिंग टू स्टेबल जोन, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट हैज अगेन गॉन इन डेली चार्ट as well as on weekly chart in overbought zone. Stochastics 88 and 93 they have respectively on daily and weekly charts. So जब भी मार्केट ओवरबॉट जोन में जाएगी, do expect some kind of correction or consolidation before the market gains strength to take the next step or next up move or down move, right? So
consolidation and correction shall not surprise you at this level, right? And अगर हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें फ्रेंड्स ऑन इंट्राडे बेसिस, तो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ लेवल्स यू कैन ट्रेड इन निफ्टी. सो 13,217 से 13,278 तक ये जोन को ट्रेड न करें. इट माइट be a volatile zone and it might be a range bound volatile zone. तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस होते हैं. 13,278 के ऊपर अगर प्राइस जाती है एंड सस्टेन करती है 15-20 मिनट्स there, then you can trade for 13,300, but it's quite close, right? तो आपको एक 20 पॉइंट मिलेगा, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका बराबर नहीं होगा, so it would not be advisable. 13,300 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, yes, 13,350 का नेक्स्ट टारगेट है एंड यू वुड सी अराउंड 50 पॉइंट्स. एंड अगर वो लेवल टूटता है विद अ बुलिश बायस एंड राइजिंग वॉल्यूम, डेफिनेटली 420 आर नेक्स्ट टारगेट. 70 एडिशनल पॉइंट आपको मिल सकते हैं, बट पार्ट प्रॉफिट आप मेरे ख्याल से 13,350 में बुक कर लेंगे, तो दैट्स बेटर. नाउ इफ द मार्केट opens gap down, what you do, अगर 13,154 पे या 13,186 पे खुले, तो you will see the buying interest is emerging and your target should be then 12,378 and 13,300. फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट, राइट? तो दिस कुड बी योर स्ट्रेटजी. अगर गैप अप स्टार्ट होती है फ्रेंड्स मार्केट, व्हाट डू यू डू देन? लेट्स से अगर मार्केट 13,300 में या 13,350 में होती है, तो फर्स्ट इट विल कम टू रीटेस्ट दिस लेवल. Which level? It may come to retest 13,278 level, तो आप पार्ट प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हैं. इट में फर्दर कम डाउन अ लिटिल टू 13,217. ये लेवल, ये एक बार ये जोन को टेस्ट करके फिर ये अप मूव रिगेन कर सकता है. सो आप अपनी शॉर्ट की फिर पोजीशन 13,217 में सारी क्लोज कर लें. दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड निफ्टी ऑन इंट्राडे, राइट? अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड यूज स्टॉप लॉस, एंड अगर आप प्रॉफिट में हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें. दिस इज माय evergreen comment, right? And if you are in profit, friends, keep on booking the profits. Nobody has become poorer by booking the profits at any given point of time. Of course, during the day trading hours, you should look at option chain data, because that tells you the emotions of bulls and bears in live market, apart from looking at USD INR chart and India VIX chart, right? And अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो तो उस स्टॉक के ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में देखें. यूएसडी आईएनआर के अलावा US30 एंड S&P 500 के चार्ट पे नजर बना के रखें. अगर 1-1:30 बजे के आसपास में, देन यू शुड लुक एट डेक्स एंड FTSE चार्ट्स. दे हेल्प यू टू नेविगेट थ्रू द मार्केट एंड अंडरस्टैंड गेज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. Right. I hope, friends, you are able to trade and invest, momentarily in the stock market with confidence and with profits. Thank you very much for watching the video and liking the video. Do subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you get a notification, right? And be generous, of course, to share these videos with your friends and trading community so that they can also be benefited. Thank you once again for liking and watching the video. Please share the video with your friends. Signing off until the next video. Good luck, happy trading, happy investing, friends.